Assalamu alaikum ji, it's Wali here once again with another big podcast. I've got the main man Jalal here. Sup, guys? Today we're going to have some intellectual discussion with Aneela Shahzad, who is a geopolitical analyst and a writer. She has written multiple articles for the Express, the News, and various other big newspaper organizations in Pakistan. We're so proud of her work. She's written a few books. We were just talking about the books. Maybe we can link her books in the podcast so people who are interested can also read her books, which are very important. Some of them cover geopolitical issues like Syria, like Afghanistan, and what's happening in the world. Do you have internet? No, we don't. I just I checked. think I think you're opening an Indian site. Oh, So, acha. so what? How should we start? So, We've been here. It's first of all 1 बज गए बल्कि 2 बजने वाले हैं कि वो वाली सेटअप ही नहीं कर रहा था तो we've been talking about politics throughout and we've had some really We've interesting had an offline podcast already. हाँ Right. 3 yes, hours yes, long. we have. तो ऐसी चीजें थी हम मेरे ख्याल से कैमरा में अगर कहते तो काफी मसला होता था really went at it with our political views and our views about like history so that was fun now yeah now let's get Firstly, you should introduce the guest, and the guest should say something. I'm Mom. Assalamu alaikum. How are you? How's your day been? She's just been in the PTI ka jalsa at wow. in Lahore. Imran Khan was there. It was at Dharampura. It was a good jalsa. Some of the things he said were like the things he's always repeating for the last month, but they're very important. तंग आ गया तू मतलब इमरान खान की बातों से रिपीट कर रहा था Imran Khan for life. So yes, Mom, can you explain what happened today? How was the jalsa, and what were the things that Imran Khan pointed out today? yeah please Yeah. Actually, I'm at such places just because to learn what's happening. So it's always amazing. जब भी मैं गई हूँ, there are so many people. There's such a big crowd, and people were just मतलब coming in, आ रहे थे, और it was very humid. बहुत गर्मी बहुत थी, लेकिन it was jam packed. और luckily मतलब इमरान खान came on time. And और आने के बाद he didn't take a lot of time. He started his speech तो बड़ा अच्छा रहा. And till the end people were coming in. तो अच्छा लगा हालांकि it's a congested place यानी कि जगह छोटी है वो ना उसमें इतनी आवाम आना मुश्किल है लेकिन people were still coming. Or were there like families and women and children Yeah. this time? Yeah, people, ladies were coming with little kids in their like laps, and we saw a lot of people. Men, they were definitely more men, but they were family people also coming with their families. Yes. And Imran Khan is these days talking about regime change, and he's talking about what is happening. So recently, for our foreign viewers as well, what's been happening is that there's this very big journalist Imran Raz Khan who's been recently jailed, and the regime change operation has not been that successful because the PMLN and the Zardari government, they both are sunk in Imran Khan because all the day they're talking about Imran Khan. What Imran Khan does, why Pakistan's economy is so bad because of Imran Khan, but they do not focus on the fact that they're in the government. They should have a plan right now. So yeah, please can you explain one or two good points that you heard from Imran Khan today? yeah Yeah, well, definitely he has been talking about regime change, and we believe that is a true narrative because no country, no nation, no community of people deserve in this 21st century, especially जबकि हम कहते हैं कि we are all democratic people, हम लोग societies इतनी awareness है हम लोगों के अंदर और तो कि एक और बाहर से कोई भी ताकत या पावर आकर के हमें डिक्टेट करे और वो हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को खरीदे हमारे
इलेक्टेड पीपल को खरीद कर और रिजीम चेंज इम्पोज करे. आई मीन दैट इज सो रॉन्ग इन माई पॉइंट ऑफ व्यू कि पीटीआई और नो पीटीआई हमने इमरान खान के साथ खड़े इसलिए उन्हें कि दिस इज अनएक्सेप्टेबल. मतलब अगर इस कल्चर को हम कबूल कर लें, और ये यूएस इज नॉट डन दिस with us only, it's bad habit that is repeating in so many countries. Regime change मतलब एक तरीके से या दूसरे तरीके से कू करवा के, assassination करवा के, या कोई military action करवा के, मतलब किसी ना, तो this culture has to end. और इमरान खान is that one courageous man, I think, who has just stood in front of the biggest superpower of the world, and he said कि नहीं, I'm not going to take it. That's the thing. That's a very big thing. So recently, as we know, it's been a very big issue all over the world. हमारे एक जर्नलिस्ट है इमरान खान रियाज, जो कि एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी है, जिसको हम बहुत सारे पाकिस्तानी बहुत ज्यादा प्यार भी करते हैं और उसको रिस्पेक्ट भी करते हैं. The few of the major journalists who are जो कि इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे साबिर शाकिर हो गया, जैसे डॉक्टर मोहित पीरजादा हो गया, जैसे कि इमरान खान रियाज. तो इमरान खान रियाज रिसेंटली, जैसे सबको पता होगा, कि इस्लामाबाद जा रहे थे और उनको पकड़ लिया. 7 SHO थे, उसके अलावा बहुत ज़्यादा पुलिस वाले थे. और अभी जैसे हम बात कर रहे हैं, तो कुछ घंटे पहले हमें रिपोर्ट मिली है कि इमरान खान रियाज को टॉर्चर भी किया जा रहा है. एक केस उसका ख़त्म हुआ है जैसे ही आज, जो कि उसका पहला केस हुआ था, वो उन्होंने कहा कि केस लीगली तौर पे कोई फाउंडेशन ही नहीं रखता. फॉर द रीजन उसका एक केस खत्म हुआ, और जैसे उसका पहला केस खत्म हुआ तो दूसरे केस पहले बना हुआ था, और दूसरे केस के ऊपर उसको जो है जेल में दोबारा डाल दिया गया. तो इमरान खान रियाज, वी आर वेरी हैप्पी दैट ही स्टिल स्टैंडिंग वेरी टॉल, ही स्टिल स्माइलिंग. जब भी कैमरे पे बात हो रही है या किसी से फोन पे बात हो रही है, तो हमेशा यही पॉजिटिव रिस्पांस दे रहा है कि मैं बिल्कुल सही हूँ, मेरी किसी ने परेशान नहीं होना, मैं 10-15 दिन मेरे साथ ये करना है, मगर मेरी जान भी कोई ले ले तो मैं सच्चाई के और हक का रास्ता नहीं छोड़ूंगा. दैट इज अ वेरी बोल्ड स्टेप ऑन दिस गाय. एंड द पॉइंट इज के पूरे वर्ल्ड को इंटरनेशनली वी वांट दिस मैसेज आउट that in the United Nations, in all the human rights organizations, that this is very sorry to say a fascist government who is doing brutal things to a very prominent journalist. इमरान खान रियाज को 1 करोड़ लोग, मैंने सुना है कि महीने का देखते हैं, 10 लाख लोग दिन का देखते हैं, कुछ ऐसे फिगर्स हैं. तो एक बहुत बड़ी पाकिस्तान की लोगों की अमाउंट है. Jalal is not very happy with him. Let's I don't know. 5 minutes I just did the praise and Jalal still started. I don't know personally. Yeah, I've heard a couple of his videos and like he seems like an okay guy. लेकिन मैंने एक वीडियो देखी जिसमें मुझे बड़ी ताप चढ़ी, जो कि मुझे अभी मिल नहीं रही, जिसमें वो आए थे ये इमरान खान रियाज साहब कह रहे थे डिस्कसिंग द नूर मुकद्दम केस, and then he just goes on this rant कि कनेक्शन जो है ना उनका बड़ी गलत जगह पे था. उनका कनेक्शन अपने बाप से होना चाहिए था, ना कि अपने मर्डरर से होना चाहिए था. क्यों था ये कनेक्शन? He was so offended कि अच्छा वो बात करी थी. तो I was like यार, you know, there's just as a journalist, you know, when you research about something या आप कुछ present कर रहे हो, तो बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें होती हैं. जैसे वो case itself was very important, needed to be talked about. But like हम लोग क्या करते हैं, किसी तरह ढूंढते हैं विक्टिम ब्लेमिंग करना कि वो अच्छा इसके साथ ऐसे क्यों हुआ था, ऐसे हुआ था क्योंकि ये मैसेज नहीं करती थी अपने बाप को. That's why I was really stupid to be frank. लेकिन apparently मैं देख रहा हूँ कि उसने माफी मांग ली थी इस चीज़ की. See, the thing is that clarifies his statement on Noor Muqaddam. the thing is that this regime change and this very negative thing that the PML, Noon and the Zardari group have done, this is the thing that has made heroes out of these journalists. मतलब इनकी जो व्यूअरशिप आप जैसे वली कह रहे हैं कि इतनी ज्यादा बढ़ गई है बिकॉज ऑफ द रीजन कि जब नून लीग आई है इन पावर,
तो इन्होंने तमाम चैनल्स को, बिकॉज ये फ्रीडम ऑफ स्पीच पे तो बिलीव करते ही नहीं, इन्होंने तकरीबन तमाम चैनल्स के ऊपर वो लगा दिया कि इमरान खान की स्पीच नहीं दिखानी, इनके इन लिए कोई पॉजिटिव बात नहीं करनी। तो ARY वाज वन ऑफ द 1 or 2 चैनल्स जो कि रह गए थे, जो कि उसको देते थे, कवरेज भी देते थे इमरान खान को, और उसके पॉजिटिव बात भी करते। तो बिकॉज अवाम जो है वो इतनी फ्रस्ट्रेटेड थी अगेंस्ट द PML नून बिकॉज ऑफ दिस रिजीम चेंज एंड ये जो, तो इस चीज की वजह से लोगों को चाहिए था कि वो अपने मोबाइल पे ढूंढे कि भाई व्हाट्स द न्यूज, द पॉजिटिव थिंग्स अबाउट इमरान खान। तो ये लोग थे जिन्होंने मतलब वो उसको अपने यूट्यूब में, बिकॉज मेन स्ट्रीम मीडिया में तो उनको जगह नहीं मिल रही थी, तो सारा इन्होंने जो अपनी कैंपेन की, जो सारा वो यूट्यूब पे और फेसबुक और इस तरह से सोशल मीडिया, तो ये इस तरह से ये बच्चे जो है वो ये लोग हीरोज बने, और इसलिए अवाम को इनसे इतना प्यार है, बिकॉज ये उस स्लोगन को मतलब लेके चल रहे हैं जो कि उनका, जिसपे वो लोग बिलीव, अवाम बिलीव कर रही है। दैट्स द रीजन। That's a very good thing that my mom just said. And let me just, as we're talking, लाहौर में जिस दिन अरेस्ट किया गया है इमरान खान रियाज को, उस दिन एक बहुत बड़ी आवाम जो है लाहौर लिबर्टी के अंदर निकली है, एक बहुत बड़ी आवाम जो है इस्लामाबाद में निकली है, और पूरे एक पाकिस्तान में सारे मीडिया के अंदर एक वेव चली है कि जर्नलिस्ट को जिसे गिरफ्तार किया है, जैसे उससे ज्यादती कर रहे हैं। कभी ऐसा हिस्ट्री में नहीं, पाकिस्तान के 60-70 साल में हमने ऐसे नहीं देखा कि किसी जर्नलिस्ट के साथ इतना बुरा सलूक हुआ। तो लेट मी ये वीडियोस अब आपके पीछे साथ हम साइड पे स्क्रीन पे चला रहे होंगे, देयर इज नो वॉइस इन देम, सो आई कीप टॉकिंग एंड दीज आर सम ऑफ द वीडियोस। दिस इज लिबर्टी, मी एंड माय मदर एंड सम अदर PTI people were there, and matlab ke people were really furious, people were crying over there, and there was one auntie, she's talking right now, she said ke जो कि आपका है नून लीग का एक बंदा है, आई डोंट वांट टू से हिज नेम, शी सेड कि तुमने जो है वो आंसू गैस के नए कैन मंगवाए हैं, तो हम लोग तैयार हैं कैन पाने के लिए। हाँ तुम्हारे कैन हम लोग खड़े हुए, मगर ऐसा जुल्म हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इमरान खान रियाज जो है वो पूरे एक पाकिस्तान के दिलों के बहुत करीब एक इंसान, जिसके ऊपर जो है ऐसा तशद्दुद हुआ। तो थोड़ा सा मैं पूछना चाहता हूँ कि इमरान खान रियाज, आप एज ए PTI के अंदर भी हैं आप, और कैसे पूरी आवाम फील कर रही है? चलो विल कट। सारी दुनिया में अनाउंस कर दिया है, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करें और थोड़ा सा बताएं कि क्या आवाम के सेंटिमेंट चल रहे हैं, और क्या थोड़ा सा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी, ह्यूमन राइट्स के लिए भी, कि ये चीज़ जो है इतने इतने बड़े एक जो है यूट्यूब के ऊपर जो बंदा आ रहा है तो वो बहुत बड़ा है, उसकी बहुत ज़्यादा फॉलोइंग है, तो ऐसे आप कैसे कर सकते हो किसी भी मुल्क में? लाइक दैट्स द आयरनी ऑफ द थिंग कि आप अब देखोगे नहीं कि लिबरल वॉइसेस जो कि पहले एक एक बात पे इतना वावेला करती थी कि वो बोल भी रही होंगी। आई मीन फॉर एग्जांपल नजम सेठी को ले लो, ही वुड नॉट बी सेइंग एनीथिंग अबाउट दिस राइट नाउ बिकॉज ही इज सिटिंग इन द लैप ऑफ मियां नवाज शरीफ। तो और ये ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस जो कि इतना इतना बोलती हैं, तो वो क्यों नहीं इस वक्त इमरान खान रियाज के लिए, या ये जो अयाज साहब थे जिनको तदुकोप किया गया, उनके खिलाफ क्यों नहीं बात हो रही? तो ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं जो इंटरनेशनल जगह, इंटरनेशनली आप देख रहे हो कि डबल स्टैंडर्ड्स किए जा रहे हैं। मतलब इसलिए आपका ट्रस्ट जो है वो फिर ऐसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से हट जाता है लोगों का, जब वो देखते हैं कि ये डुप्लिसिटी हो रही है और असल में जो रियल ऑथेंटिक चीज़ें हैं उनको सपोर्ट नहीं किया जा रहा। अब एक तो ह्यूमन राइट जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको सबसे पहले तो ये बात करनी चाहिए ना कि रिजीम चेंज हुआ कैसे, इसको एक्सेप्ट कैसे किया गया, क्यों किया जा रहा है, उसके खिलाफ किसी एक भी आपकी UN की किसी ऑर्गेनाइजेशन ने आवाज़ उठाई है? किसी ने भी नहीं उठाई। तो इसी तरह से हमारे जो जर्नलिस्ट हैं उनको राइट है
कि वो इमरान खान के हक में बोले या नून के हक में बोले, उनको राइट है, वो बोले, जितनी मर्जी वीडियोस बनाए। ये क्या बात है कि उनको पकड़ पकड़ के मारना शुरू कर? बिकॉज जो नाम आप नहीं लेना चाह रहे थे वो बंदा, ही इज अ मेंटल पेशेंट। उसको पता है कि एक ही तरीका है लोगों से डील करने का कि उन्हें पकड़ो और मारो, और वो कुछ समझता ही नहीं है, मतलब मेंटल केस को, और कुछ नहीं पता। हाँ, what do you think, जनाब? बात सही की है। मेंटल केस कौन है? No, we don't want to take names in our podcast. But the point is कि जब से ये regime change operation हुआ है तो ना सिर्फ जर्नलिस्ट के ऊपर बल्कि आवाम के ऊपर भी और नॉर्मल लोगों के ऊपर भी, मैं जब इमरान खान रियाज के प्रोटेस्ट पे गया हुआ था तो मैं और भी वहाँ मैंने देखा कि एक औरत कह रही थी कि मेरे घर पे अभी 2 दफ़ा पुलिस आई है, और बहुत ज़्यादा जो है ना फोर्स, जो नवाज शरीफ गवर्नमेंट है ये बहुत ज़्यादा फोर्स इस्तेमाल कर रही है अपने लोगों के ऊपर। और इनका ये तरीका है कि इनका रूल करने का तरीका ये नहीं है कि अवाम के दिल जीतें या कोई अवाम को रिलीफ दें, बल्कि इनका तरीका ये है कि अवाम को अपने दबा के रखना है, बोलने नहीं देना। और कोई बच्चा निकल जाए घर से बाहर तो उसको पुलिस पकड़ी, छितर लगाए, उसको जेल में डाले, और बिल्कुल ब्लैकमेल, हर चीज जो है ना जाके भत्ता लेना है दुकानों से, ये इनका सिस्टम है। तो एनीवेज वी होप कि इमरान खान की गवर्नमेंट दोबारा आए, एंड वी वेरी सैड अबाउट इमरान खान रियाज, बट शिफ्टिंग टू अनदर टॉपिक। नहीं, वैसे उससे पहले ना मुझे वो इंस्टाग्राम पेज, यार वी शुड ना लॉग इनटू इंस्टाग्राम हियर एज वेल, तो यू लुक एट पेजेस। बट ये ना आज मुझे ना पता ही नहीं था इन भाईजान को मार पिटी और समथिंग, तो आई सेंड यू दिस वन। तो ये आर्टी, दिस इज इमरान खान विक्टिम ब्लेड नून मुकद्दम मर्डर, ये बेसिकली एक पेज है लेफ्टिस्ट, तो दे शेयर लाइक, तो ये ना आप सारे वो ट्वीट्स उन्होंने किए, दिस इज द वीडियो जो मैं आपको दिखा। This is besides the point ना, ये तो before regime change, before politics में हाँ, था। ये बात है। मैंने यही तो बताया कि ये So इसकी now जो, they become heroes. yeah, Because of this this, yeah. thing has made them heroes, वरना Yeah. इससे पहले तो they were normal people Now doing all the wrong things. now there's protests for them and like ये नून लीग की ना बड़ी एक स्पेशलिटी है, ये ना लोगों को फेमस कर देते हैं, they're so oppressive that they get famous कि ओ इसके साथ भी जुल्म हो रहा है, इसके साथ भी जुल्म, तो ये तो मसला है। प्रेस कर दिया। जलाल थोड़ा सा ना माइक के करीब रह के बोलना है जब भी तुम्हें बोलना है। Yes sir, yes. That's Sorry, more like that. Lean back कर लेता हूँ। अच्छा, तो moving to another topic, I want to talk about the concept of soul. अच्छा, ये What is soul? Islamically अगर हम देखें तो इंसान जो है, this is not like a permanent life that we're living right now. ठीक है। मुसलमानों का एक कॉन्सेप्ट है कि हम टेम्परेरीली इस दुनिया में आए फॉर अ टेस्ट, और जो हमारी असल जिंदगी है वो इसके बाद है। And there's something, मुसलमानों और क्रिश्चियंस और जूस का, हाँ, mostly. And the prevailing sentiment is कि this is not the permanent body, this is just a temporary body, and the soul is the real thing. And science is also within the research that has been happening. So there's not just matter, there's something more that is happening, that is consciousness. अगर पूरी यूनिवर्स होती और यूनिवर्स को ऑब्जर्व करने वाला कोई ना होता, कोई देखने वाला ना होता कि क्या ग्रैंड स्केल है, कोई अप्रिशिएट करने वाला ना होता, तो यूनिवर्स का कोई फायदा था। तो कॉन्शियसनेस और द एबिलिटी टू थिंक, द एबिलिटी टू फील, एंड व्हाट आई हैव हर्ड इज कि लव is something that can transcend all boundaries, that can transcend all dimensions. If someone loves you, you can feel it in another universe. That's what I've heard. And we've also heard that there's a lot of concepts. Sometimes we've heard that what I wanted to. Can you guys say Like- something about the soul? अच्छा, About, हाँ, you talk about the soul and like how love transcends universes. But like, what sort of love? Like, do you mean like the love of a lover, or your parents, or your siblings, or like what sort of love, or love for God? love for God. Why? This is a very valid point that अफ्रीका के अंदर जब 6-7 मर्द जो हैं वो एक रॉक को बीच में रख के उसके आगे डांस करते हैं,
So they feel the sense of spirituality. They feel the sense that a God is around them. और जब उनसे आप पूछो कि क्या ये पत्थर के अंदर खुदा है, तो they're like ये पत्थर के अंदर खुदा नहीं है, but when we do these rituals, we can feel someone watching us over, yeah, someone from a very far distance. We can feel the love. And scientific, religious and scientific, मैं दोनों पूछना चाह रहा हूँ. Religious point of view से, scientific point of view से ये बात है कि अगर let's suppose आप अपनी आंखें बंद करते हो, that is a very good experiment that you can do. अगर आप अपनी आंखें बंद करते हो तो what do you see forward? जो आपका दिमाग एक तरह से कंस्ट्रक्ट हुआ है, तो what do you see forward is black light, and what do you usually see backwards is white light coming from the back. So something like this there's not just this body, there's some hardware, there's not just the hardware, there's also software. Now what is the software? What do you think about the soul? How important is the soul, and do you think ये मैटर के ऊपर, पैसे के ऊपर, ये सारी चीज़ों के ऊपर, दुनियावी चीज़ों के ऊपर हमें इतना फोकस करना चाहिए? We should be more spending most of our time in taking care of the software rather than all the hardware. Acha, so you're saying we shouldn't be involved in things we do in this life, financially or is tarah, but instead take care of our like soul and do good deeds and go to like heaven, right? Acha. So auntie, I think we'll both agree with that. कि ये करना चाहिए. But like यार, I feel like जिस तरह like religious organizations आपको कहती है ना कि भाई आप सारा कुछ छोड़ दो और बस, you know, and I'm not talking about Islam खाली, like Saudi में when I met like a lot of Christians and I found out about their lifestyle and उनके मज़हब में भी यही है कि सारा कुछ छोड़ दो, the world comes after, they just start preparing and be a good Christian and you know pray and do these things. Or so I guess that's fine to an extent with आपको करना चाहिए obviously, like, but there's so many things you need to try, और जैसे meditation and things like that, और financially बड़ा ज़रूरी होता है यार, मतलब बंदा spiritual भी तब feel करता है आपके पास पैसे हो, आप यहाँ से मक्का की टिकट बुक कराओ, ये मैं उम्रा करने जा रहा हूँ बेटा, वरना तो आपके पास पैसे नहीं, आप ये चीज़ें नहीं कर सकते. उम्रा बहुत महंगा हो गया from what I've heard, और आज तो मत पूछो. थोड़ा सा अपना उम्रे का एक्सपीरियंस शेयर कर और इस उम्रा करके क्या तेरी सोल को कुछ हुआ, satisfaction, और क्या फीलिंग हुई और recently give us some stories. His brothers and his sister was also there. They came. He was in Saudi. His whole family came to Saudi, and he had a very wonderful umrahs. 3 umrahs this time. Yeah, मतलब 6 महीने के स्पैन में 2 उम्रा, 4 actually. One जब शुरू में गया था, तो क्योंकि पहले 2 साल गया ना मैं सऊदी, तो I couldn't do an umrah. और आंटी मुझे कुछ टाइम के लिए लगा there was something wrong with me, क्योंकि मैं गया जाते साथ उन्होंने कहा था उम्रा कर लेना. My city was closer to Medina, तो पहले 6 महीने मैंने किया नहीं. उसके बाद जिस दिन मैंने उम्रे का प्लान किया ना, उस दिन लॉकडाउन हो गया कोविड का, तो I was like हाँ, I thought, लेकिन फिर I was like कि जलाल तो उतना इम्पोर्टेंट हो नहीं सकता कि मतलब पूरी दुनिया का उम्रा बंद हो जाए. But like I finally this time I went, and my first umrah was really nice. I did it with my friend. You feel that spirit or that something different? Soul connection हुआ. Achha, auntie, to be honest, like I haven't talked about it too much to a lot of people, but I did feel very spiritual. आप वहाँ पे जाते हो ना, तो it's a different feeling once you the first time you see the Kaaba ना. So I remember जैसे अभी हम बात कर रहे थे ना, atheist, तो मेरा एक atheist दोस्त होता था, कहता था बचपन में कि what if I go see the Kaaba and मुझे कुछ feel ना हो, like what will I do then, right? And so I went there, and जब आप पहली दफा देखते हो ना काबा को, what a wonderful, like magnificent sight it is. मतलब आपको टीवी पे आप देखते हो ना, it doesn't do justice to, like, you know, when you see it and you're like, oh wow. तो वो एक दफा I was पहला उम्रा especially, I was like taken aback. I was like, what a wonderful experience, and I might have cried. Just you felt that with the Kaaba, or you felt something bigger? मतलब the Kaaba, so मतलब एक वो उसका structure is the house, but like the house of God, in but not the God. yeah, but in the entire vicinity आपको एक बड़ी एक
feeling आती है, you're somewhere, you know, special. Even in the Prophet's Mosque, आप वहाँ जाते हो तो it's very peaceful. And आपको ना, अब आप हर जगह जहाँ पे देख रहे हो, me and my brothers were walking, and एक बंदा था, वो कुरान कैरी कर रहा था, और मस्जिद है तो सारों के जूते यूं उन्होंने पाइल अप किए हैं. तो आई नोटिस दैट ही वाज, मतलब वो एक बड़े अजीब तरीके से वो कर रहा था, वॉक कर रहा था. ही डिडंट वांट कुरान टू बी ऑन द लेवल ऑफ जहाँ पे वो, मतलब थोड़ा सा वो इस तरह जा रहा था. तो आई जस्ट फेल्ट लाइक एवरीबडी, मेरे जो भाई थे वो जूते नहीं पहन रहे थे in the entire mosque. So I had to follow. That was burning my legs. So, but yeah, क्या कहते हैं, it was. But there's a very distinct यानी atmosphere में difference होता है ना मक्का and हर Medina. कोई आया हुआ है to, like, you know, to worship and to be there closer to God. तो वो एक आपको फिर affect करता है कि वो अच्छा, you know, there's something. फिर आप, I feel like everything you work on, it gets better. So even spirituality, when you try to work on your relationship with God, it gets better. So yeah, इस बार बड़ा adventurous हुआ. आंटी आपको शायद पता हो, मेरे घर में ना 2 भाई, वैसे तो 5 भाई, एक शिया भाई है, एक सुन्नी भाई है, वो हमेशा से लड़ते रहते थे. और मैं पूरा टाइम बस यही देखा है. एक भाई कहता था ये देखो ये ऐसे होता है, दूसरा भाई कहता है ये लोग पागल होते हैं, तो मैं ऐसे ऐसे होता है. तो इस बार मैंने ज़्यादा ट्रैवलिंग अपने सुन्नी भाई के साथ की थी. तो अच्छा, उनको ये हुआ था कि उन्होंने ना प्रॉफिट की अम्मी की कब्र देखनी थी. वो है अल अबवा में. वो एक आप मक्का से जा रहे होते तो उसकी रास्ते, मदीना के रास्ते में, पर लाइक वो वहाँ पे आपको बड़ी मुश्किल से उसकी लोकेशन मिलती है, जो कि मैं ऑनलाइन पर यूट्यूब वीडियोस पे देखी हुई है. वो तो यू नॉट अलाउड टू गो, सऊदी गवर्नमेंट ने बैन की हुई है. तो अब भाई ने कहा कि मैं तो सोच के आया हूँ और तुम्हारे पास गाड़ी भी है, तुम ले जाओ मुझे. आई लाइक चले, आई डेंट नो कि इतना होगा. मैं वहाँ पे गया तो वो उन्होंने ना वहाँ पे कोई मज़ार वगैरह नहीं बनाया हुआ. तो यू हैव टू गो फ्रॉम द साइड, फिर आप चलते हो कोई 5 मिनट, एंड देन उनकी कबर है, एंड इट्स जस्ट एक ही कबर है, क्लिफ सी है उसके ऊपर है, एंड इट्स नॉट मेड और एनीथिंग. वहाँ पे अगर आप ज़्यादा देर खड़े हो तो सऊदी पुलिस भी आ जाती है. अपेरेंटली आई डोंट नो उनको क्या मसला है, लेकिन आई गेस लोग फिर दुआएं मांगने लग जाते हैं, और आई डोंट नो. तो वो बाहर उन्होंने पर्टिकुलरली ये कब्र तो बैन की. तो हम उधर गए. उसके बाद ही टुक मी टू लाइक ऑल दीज कब्र, प्रॉफिट के चाचा की कब्र, हज़रत हमज़ा. आई वेंट टू बीबी खतीजाज़ इन मस्जिद जन्नतुल बकी. जन्नतुल बकी. और वहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस हुआ. अब अगेन मेरे एक भाई शिया है, एक सुन्नी, ठीक है. तो पहले तो दोपहर को मैं एक दफ़ा चला गया अपने सुन्नी भाई के साथ. वो एक जनाजा जा रहा था, उसके साथ हम शामिल हो गए. वो अलाउड नहीं होता, उन्होंने बाद में निकाल दिया था, क्योंकि बट लाइक हमने जाके फातिहा वगैरह पढ़ी, वो कपड़े दी. फिर ना मैं, मेरा सुन्नी भाई, मेरा शिया भाई, वी वॉकिंग, एंड अब ना वी ऑल प्रेइंग. और शिया वाले भाई तो ज़्यादा, यू नो, उनका मसला सऊदियों से, मतलब शिया का मसला है कि वो, यू नो, कब्रों पे टाइम नहीं स्पेंड करने देते, पढ़ने नहीं देते उनको, और उनके, यू नो. तो शिया भाई तो उन्होंने नई स्ट्रैटेजी की, वो जाके खड़े हो जाते, प्रिटेंड करते लाइक सुन्नी है बस यूँ, लाइक. तो उनको तो कुछ नहीं कहा. जो सुन्नी वाले भाई है ना, उनको पकड़ लिया पुलिस वालों ने. वो पता नहीं फातिहा बड़ी जो, मतलब यू नो, होता नहीं शिद्दत से कि मैं, ठीक है. और वहाँ पे ना पता नहीं कोई मिट्टी शिट्टी पड़ी हुई थी, भाई ने ना ऐसी पकड़ी हुई थी. वो आ गया पुलिस वाला, उसको लगा मेरे ये वाले भाई शिया है, जबकि वो नहीं थे. और मेरे जो शिया वाले भाई है वो सुन्नी बन के आगे पहुंचे हुए थे, उनको नहीं रोका. कुछ भी नहीं, फातिहा पढ़े, तुम चलो. तो अब मैं बीच में आ गया. मैंने कहा हबीबी, we're only here for 5 minutes, we're just leaving. उसने कहा तुम दोनों इकट्ठे हो, दोनों. उन्हें लगा हम सीए हैं. But like it was quite the experience. मतलब मजा आया. Like especially the first Umrah, auntie, it was just like I felt like there was something there, okay, you know, like you connect to a higher power, like आपको feel करते हो presence वहाँ पे. So that was an experience, yeah.
Good enough. Good enough. That was a very brave and amazing story that you told. And, do you want to say something about the soul or the mind in search of Islam or Yeah, physics or I anything? think I was reading Iqbal's book recently again. Mhm. तो उसमें भी he is like trying to establish this thing कि soul क्या चीज़ है, because you know Islamic जो हमारा ट्रेडिशन है उसमें ये एक बड़ी इशू रहा है कि जब 200-300 साल प्रॉफिट के बाद जब ग्रीक सारी बुक्स ट्रांसलेट हो गई थी ना अरबिक में, तो इन्होंने अपने रिलीजन को कुरान को ना ग्रीक की फिलोसफी के लेंस से देखना शुरू कर दिया। तो वो इकबाल सेज इन हिज बुक ना कि ये जो मेथड ये जो कल्चर बन गया था ये बड़ा हमारे लिए नेगेटिव था, बिकॉज ग्रीक्स जो थे वो माइंड और बॉडी की डुअलिटी पे वो करते थे ना, लाइक बिकॉज इकबाल सेज के अगर हम इसको दो डिफरेंट चीज़ें कर दें तो फिर हम लोग उसको नहीं मतलब उस स्पिरिचुअलिटी को नहीं कर सकेंगे ना, बिकॉज व्हाट ही इज ट्राइंग टू से इकबाल, बिकॉज उसकी जो बुक है ना वो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इस्लाम अकॉर्डिंग टू यू नो द न्यू साइंसेस, इसी वो पे है ना। Reconstruction of Islam in light of religion, कुछ ऐसे नाम है। पता नहीं। अच्छा, you were saying? हाँ, तो मतलब द थिंग ही वांट्स टू से अबाउट इस्लाम एंड अबाउट स्पेशली अबाउट द कुरान इज दैट कि कुरान ने जो हमें मैसेज दिया ना वो ये दिया है कि नेचर को ऑब्जर्व करो, बिकॉज कुरान में जो ना बार बार ये पैसेजेस आते हैं जिसमें आप हवा बादल कैसे चले और ये किसी ज़मीन को जरखेज कर दिया और मतलब वो वाटर साइकिल की, और फिर वो बी की जो एग्जाम्पल है और बहुत सारी नेचर की चीज़ों की एग्जाम्पल जो देता है अल्लाह ताला कुरान में, वो इसीलिए है कि ऑब्जर्व करे इंसान अपने इर्द गिर्द अपनी जो फिजिकल इन्वायरमेंट है उसको ऑब्जर्व करे, उसमें से वो लर्न करेगा। तो इसलिए मतलब बट इकबाल वांट्स टू से इसके बॉडी और माइंड जो है ना उसको आप टोटली दो अलग इंडिपेंडेंट चीज़ें मत बोलो। बॉडी सर्वाइव नहीं कर सकती माइंड के बगैर, माइंड सर्वाइव नहीं कर सकता बॉडी के बगैर। आप बॉडी नहीं होगी तो माइंड कहाँ पे होगा? तो लाइक व्हाट ही वांट्स टू से इज दैट कि ये किसी ना किसी तरह बहुत डीपली अंदर से जुड़ी हुई हैं, और इसी बेसिस पे वो ये कहता है जो अभी जलाल कह रहा था कि प्रैक्टिकल लाइफ जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस्लाम डजंट प्रीच वो जिसको कहते हैं ना रहबानियत, वो क्रिश्चियनिटी में वो कॉन्सेप्ट है, शायद और रिलीजन्स में, लेकिन इस्लाम इसको नेगेट करता है। इस्लाम तो एक बहुत प्रैक्टिकल जिसमें कारोबार भी करना है और हर काम करना है, शादी करनी, एवरीथिंग, हर चीज। तो इस तरह की स्पिरिचुअलिटी इस्लाम जो है ना वो लेकर आता है जो आपको यू नो सूफी हमारे एक मूवमेंट और बहुत बड़ी अभी तक मतलब सूफिया और ये चीज इसके भी खिलाफ इकबाल ने लिखा है, बिकॉज वो भी इसी तरफ लेकर जाती है कि सिर्फ स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेकर जाती है जो जो आपको प्रैक्टिकल लाइफ से, अर्थली लाइफ से, सेकुलर लाइफ से बिल्कुल कट ऑफ करने की बात करती है। तो दैट इज समथिंग जो इकबाल कहते हैं कि ये मतलब कुरान का ये मैसेज नहीं है। कुरान का मैसेज ये कि सेकुलर और स्पिरिचुअल को साथ लेके चलना है, लेकिन ऑफ कोर्स जो स्पिरिट की इम्पोर्टेंस है वो डेफिनेटली बीइंग अ रेजिडेंट ऑफ द बॉडी, हमारी जो सोल है या स्पिरिट है वो बहुत ही यानी कि बिकॉज ऑफ द रीज़न कि अल्लाह ताला ने जब इंसान को पैदा किया और फरिश्तों के सामने मतलब आदम को लाया गया, और अल्लाह ताला का के वर्ड्स ये हैं कुरान में कि जब मैं इसके अंदर रूह फूंक दूंगा, अपनी रूह फूंक दूंगा तो तुम सब सजदे पे गिर जाना, ठीक है, और सब गिर गए एक्सेप्ट इब्लीस। तो अल्लाह ताला ने अपनी रूह मीन्स क्या है? रूह का लफ्जी मीनिंग जो है ना एयर है, हवा, लाइक ब्रेथ। अल्लाह ताला ने अपनी ब्रेथ उसके अंदर आदम के अंदर, तो वो जिसको एक तो होती है ना लाइफ, लाइफ तो प्लांट्स के अंदर भी है, लाइफ तो एनिमल्स के अंदर भी है, लेकिन ये जो स्पेशल चीज जो रूह इंसान के अंदर फूकी गई है ना
वो सोल कुछ और है, और उस सोल, वो सोल जो है ना कनेक्ट होना चाहती है उस ओरिजिन से जहाँ से वो निकली है, यू नो। और इस ये जो स्पिरिचुअलिटी का आई थिंक सो कि मीनिंग यही है कि इंसान फील करता है कि वो इस वर्ल्डली सेक्युलर एनवायरनमेंट में वो एलियन फील करता है। वो फील करता है कि जैसे यार कुछ और है, और ये कुछ और है कि अर्ज, एक तो पहली अर्ज है कि मैं हूँ, आई एम, ये है उसकी ईगो, ठीक है, उसकी सेल्फ ये है। लेकिन फिर कि देयर समथिंग एल्स, तो उस ये अर्ज उसको हमेशा मतलब एक्टिव रखती है। मतलब इज ऑलवेज लर्निंग, फाइंडिंग आउट, डिस्कवरिंग। मतलब इंसान ही कर रहा है ना ये सब डिस्कवरी, ये सब इन्वेंशंस, ये सब। और फिर इंसान के अंदर ये प्रॉब्लम है कि वो कह रहे हैं कि भाई यूनिवर्स शुरू कैसे हुआ था। अभी पूरी साइंस है कि भाई ओरिजिन, स्टार्ट ऑफ यूनिवर्स कैसे हुआ। That was actually my next question about the universe and the start of the Big Bang. You just continue. What were you saying? तो इंसान के अंदर ये एक जो वो क्या है, आग है या एक फायर जिसको कहते हो, कि वो कभी ना खत्म होने वाली अर्ज, कि नहीं अभी ये मालूम हो गया तो नाउ यू आर रियली हैप्पी कि यू नो समथिंग नाउ, बट देन यू वांट टू लर्न मोर। देन वो भी आपने लर्न कर दिया। कितनी साइंसेस डेवलप हो गई, कितना डाटा इतना है कि कोई भी इंसान उस डाटा को पूरी तरह पढ़ नहीं सकता, लेकिन देयर इज अर्ज टू फाइंड मोर। तो ये अर्ज जो है ना, ये बिकॉज ये उस ट्रांसेंडेंस की तरफ जाना चाहती है, यू you नो जो अभी फिजिक्स, जो थियोरेटिकल फिजिक्स है ना, वो बहुत ज़्यादा इसी चीज़ की तरफ आती है कि यूनिवर्स बनी कैसे और बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। यानी कि वो एलिमेंट्री लेवल पे जाना चाहते हैं, क्वांटम से भी डीप। अब वो जो स्ट्रिंग थ्योरी और वगैरह, कि वो क्या है, एक्चुअल क्या है, मतलब। और वो कहते हैं कि हम थ्योरी ऑफ एवरीथिंग ढूंढना चाहते हैं। मतलब व्हाट इज दैट वन थिंग जिसको पता करने से हमें पूरी दुनिया को पता चल जाए कैसे चल रही है। मतलब ये तो एक सेक्युलर थॉट है, लेकिन मैं समझती हूँ कि थ्योरी ऑफ एवरीथिंग के पीछे एक स्पिरिचुअल थिंग है कि मैन वांट्स टू फाइंड आउट कि हु इज बिहाइंड दिस एवरीथिंग। आप उसको निगेट कर रहे हो, बिकॉज साइंटिफिक कम्युनिटी, यू नो, वेस्टर्न साइंटिफिक कम्युनिटी रिलीजन को बहुत ज्यादा निगेट करती है। उसके बिल्कुल वो डार्विनिज्म को इसीलिए वो इतना प्रमोट करते हैं, बिकॉज दे वांट टू से दैट देयर इज नो गॉड। ये जो आपका स्टीफन हॉकिंस था, उसने आई थिंक उसका वन ऑफ हिज कोट्स के द ओनली अदर ऑप्शन इज गॉड, बट दैट्स नॉट एन ऑप्शन फॉर अस। सो दैट्स वाई उनकी थॉट और थ्योरीज बेस्ड इस पर होती है कि वो ऑप्शन बताओ जिसमें गॉड ना हो। तो लेकिन ये जो रियल जो अंदर, यू नो, जो चीज है हमारे अंदर, वो एटम्स नहीं है। वो लाइक वो क्या है, यानी कि आप उसको वो ऐसा फाइन मटेरियल है कह लो। अगर वो कोई मैटर है तो वो इतनी फाइन मैटर है कि उसको आप टच नहीं कर सकते, उसकी कोई लेंथ ब्रेथ नहीं है। मतलब वो इतना, यानी यू कैंट से कि दिस इज द सोल, बट दैट इज द रियल थिंग फॉर अस, नो। अगर सोल नहीं होगी, अगर ये थॉट नहीं होगा, अगर ये आए नहीं होगा, तो फिर क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा फॉर अस, तो फिर खत्म है ना। Exactly. तो कोट इतना आई थिंक therefore I am, मैं सोचता हूँ तो, लेकिन I'm just while you were talking I was thinking about this कि जो सोल का कॉन्सेप्ट है, माइक के करीब। sorry Yes, sorry so my you're bad. out. I was watching this movie today, आज ही देख रहा था, उसका नाम था पृथ्वीराज चौहान या समथिंग लाइक, कोई इंडियन फिगर के ऊपर थी। और उसमें ना अक्षय कुमार होता है और उसकी बीवी होती है, और अक्षय कुमार को ना वो मार देते हैं। जैसे ही वो मरता है, आंटी बड़ा फनी सीन है, वो हिज वाइफ, क्योंकि उसको पता चलता है कि वो मर गया, और वो ना गाना चल रहा होता है, वो भाग रही होती है, और प्रॉपर जैसे स्प्रिंट नहीं कर रहे होते, वो भाग रही होती है, और एकदम ना मैं देखता हूँ कि उसने जंप लगा दी, और वो नहीं, साथ उसके 50 और भी लड़कियां होती, और वो दे जंप इनटू फायर। एंड सो आई वाज लाइक थिंकिंग के मतलब यू नो उनको फिर ये लगता होगा कि आपकी जो सोल्स हैं देयर इन पेयर्स, ठीक है, और अगर आपका हस्बैंड नहीं है तो देन यू जस्ट जंप इनटू फायर। आई लाइक
किस तरह सेकंड propagate मैरिज की करें। ऑप्शन नहीं रखी हमने। लड़कियों के लिए तो नहीं रखते और सीधा मतलब जैसे आप जंप नहीं मारते अंदर। I was like, dude, और ऐसे म्यूजिक लगाया तो जैसे प्रमोट करे। अच्छा, और सारी मूवी में ना उससे पहले अक्षय कुमार कह रहे हैं औरतों के हक, औरतें हमारे साथ इक्वल हैं, सब कुछ इक्वल है, तो मेरे साथ वो किंग होता है, वो कहते हैं तुम मेरे साथ दरबार में बैठोगी, वो कहते हैं नहीं नहीं औरत कैसे दरबार में बैठ सकती। फिर आधे घंटे का लेक्चर होता है, क्यों नहीं बैठ सकती, स्त्री स्त्री से तो स्त्री औरत स्त्री से तो हर चीज है। और उसके कोई लगभग आधे घंटे बाद वो स्त्री जो है सारी वो जंपे मारी होती है। तो I felt like, you know, their concept of the soul is very different. बड़ा If different. that was such so, तो अगर वाइफ मर जाए तो why doesn't the husband jump into fire? नहीं आंटी, मैं ये नहीं कह रहा, मैं सोल की उनके बात। साथ अग्री नहीं करा। अच्छा। मैं तो खुद मैं आया मैं तो बता रहा हूँ कि मैंने ये देखा तो उससे ओपिनियन बनाया। लेकिन हाँ बिल्कुल, मतलब फिर तो ऐसे ही होना चाहिए ना कि अगर बीवी मर जाए लड़के को भी, लेकिन वो तो उसकी शादी करवा दो। बेसिकली उनकी पॉलिसी होती है कि अगर एक कपल है और लड़की मर गई है, एक्चुअली सब कॉन्टिनेंट में औरतों की पॉपुलेशन वो ज्यादा है ना, उसको कम करने के लिए। तो ये तो बल्कि आके ब्रिटिश ने भी बड़ी खत्म की थी ना, सती। सती। हाँ। इसका नाम मैं भूल गया, आई थिंक इसको जोड़ा कहते हैं या समथिंग लाइक दैट, द एक्ट ऑफ जंपिंग इनटू फायर, हस्बैंड डाइड। सॉरी, मैंने स्पिरिचुअलिटी के साथ तेरा ये लिंक कर दिया। It's totally unspiritual जो आप बोल रहे हो। मैं वही सोचा था कि डिफरेंट places in the world have different ways of looking at it, and अब जैसे मैं वही सोच रहा था कि for them एक ये बहुत बड़ी चीज है जो आप कनेक्ट कर रहे हो, लाइक बिलीफ सिस्टम आपका जो है ना, तो वो जिस तरह आप जिस कॉन्फिडेंस वो आग में जा रही है, शी इज श्योर कि भाई ये तो मैं बहुत ही सवाब का काम कर रही हूँ, मैं और मेरे हस्बैंड की बड़ी फिट हो जाती है। But But yeah, yeah, I don't know if it works like that. I'm pretty sure it doesn't. that's not a concept of soul. You should not jump after your husband. The whole concept of soul is discovering yourself. ठीक है? It doesn't lie in discovering your husband. Yeah. You're not living life with your husband. It's about what you want to do and how you connect and like your reason for being on earth. And that could be spiritual, religious, or you know, something else. So, for me, So that was a good point. But coming to the next topic, the very interesting topic about how did the universe begin? How did the humans begin? What we hear, some of the things, one or two things that I wanted to say before we start this topic is that we don't really know how big the universe is. The universe can be infinite, और हम लोगों की जो लोकल गैलेक्सी है 100 बिलियन लाइट ईयर्स, अगर वी आज हमें ये समझ आ जाए कि हम लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सकते हैं, तो फिर भी हम लोग कभी भी अपने 100 बिलियन स्टार्स के से बाहर नहीं जा सकते. That's the point. Or most of the stars that we see, if there are like 100 billion stars in a galaxy, then there are like 100 billion, 100 trillion galaxies. There are more galaxies than there are stars in one galaxy. और जो ज़्यादातर गैलेक्सीज हैं वो इतनी ज़्यादा स्पीड से हमारे से दूर जा रही हैं कि we can never reach them. And they're just like such an amazing structure that is the universe. So, what I wanted to talk about is how the universe began. Obviously, Big Bang theory है, मगर Big Bang इस्लाम के point of view से भी मैं सुनना चाहूँगा. And I also wanted to say this thing कि maybe there's not Big Bang जो एक event हुआ जहाँ से time start हुआ और जहाँ time end होगा. Maybe universe is so huge that there are multiple contractions and expansions going on in the universe at the same time or at multiple times. मतलब कि सिर्फ एक
ये यूनिवर्स नहीं है, इसके अलावा भी यूनिवर्स हो सकती है। एक बेस्ड रियलिटी ये है, मगर इसके अलावा भी बेस्ड रियलिटीज हो सकती हैं। फिर जो कॉन्सेप्ट है कि यूनिवर्स जब बनी तो एक इन्फिनिट एनर्जी एक स्मॉल से पॉइंट में थी, जो कि इतनी ज्यादा एक्सपेंशन थी कि इन द फर्स्ट फ्यू सेकंड्स दैट एक्सपैंडेड टू, you don't know how much, मतलब you see the whole scale of the universe. That's just like within the first few seconds that whole expansion happened. And some of our science, it breaks when we see back in the universe, when we see like uh, uh, 13 billion or 12 billion years ago, there's this CMB, cosmic background radiation. I don't know what's the short form, and we cannot see before that. And then when we try to see further from some infrared or some other technologies, we cannot actually, our whole of our physics and our quantum physics and whatever Newton, Einstein, and the latest scientists are saying, everything breaks at that point. So, what is this amazing That's place? called the Planck's epoch. Epoch might be. So, what is this amazing place that is the universe? Where does this start and where does this end? And do you guys have some amazing facts in the light of Islam or in the light of science about the universe? Or something. Something as Akshay said about it. Yeah, actually, Let's just pull up the first article on Google. नहीं अब आगे वैसे आपको बता सकता है हिंदू मिथोलॉजी जो मैंने इंडियन मूवी से पिकअप किए हैं लेकिन Our Indian movie expert is in the building. जबरदस्त Mr. Akshay Kumar से. अभी बल्कि एक बड़ी मजे की मूवी आ रही है that explains the birth of the universe according to them. It's called Brahmastra. और वो रणवीर कपूर के और आलिया भट्ट. But I was reading this quote जब हम बात कर रहे थे. Stephen Hawking says, "I think the universe was spontaneously created out of nothing." Yeah, that's And so if- amazing, no? If you Matlab, the whole science is based on this belief कि nothing comes out of nothing. मतलब अगर हम इसको एज अ लॉ मान लें कि नथिंग में से कुछ निकल सकता है, तो फिर तो साइंस पूरी की पूरी ब्रेक डाउन हो जाती है ना. हम तो कॉज एंड इफेक्ट की यूनिवर्स में रह रहे हैं, जिसकी वजह से हमने इतने सारे लॉज जो है डिस्कवर कर लिए, बनाए नहीं, डिस्कवर किए. तो टू से स्टीफन का के पास कोई ऑप्शन नहीं था ना, बिकॉज गॉड इज नॉट एन ऑप्शन फॉर हिम. तो इसलिए वो कहते हैं कि स्पॉन्टेनियसली, मतलब सब कुछ लॉ के तहत हुआ. फिजिकल लॉज हैं जो गवर्न कर रहे हैं एक एक चीज को, एक एक मोशन को. कोई एटम नहीं हिल सकता विदाउट द बीइंग सब्जेक्ट ऑफ और ऑफ अ फिजिकल लॉ. लेकिन उससे पहले जब सब कुछ बन रहा था तो उस वक्त देयर वाज नथिंग, और कोई लॉ नहीं था, कोई लॉ लिखा हुआ नहीं था. स्पॉन्टेनियस अब्रप्ट एक्शन हुआ. मतलब दिस इज एंटी साइंस. आई थिंक एट द मतलब सीड ऑफ द यूनिवर्स वो रख रहे हैं एंटी साइंस के ऊपर. तो जी बिल्कुल, जो ये वली कह रहा था कि वो एक प्लैंक इपॉक, वो मतलब आप सारे मैटर जो भी यूनिवर्स है ना उसको स्क्वीज करते जाओ. हाँ, तो फिर वो एक बिल्कुल छोटे से एक आप उसके पॉइंट पर उसको जब ले आओ तो फिजिकल लॉज जो है ना वो प्लैंक इपॉक पे खत्म हो जाते हैं. उससे ज्यादा वो आपके फॉर्मूलाज नहीं बन सकते. मैथमेटिक्स वहां पे ब्रेक डाउन हो जाती है. जो उससे छोटा उसको कैसे कंडेंस किया जाएगा. लेकिन बात ये है कि ये सारा का सारा मैटर इतनी छोटी सी जगह पे कंडेंस हुआ कैसे? क्या उसके लिए पावर नहीं, एनर्जी नहीं चाहिए? What does Islam say about that? Islam says, I think you've written an article I have about written- this written Big Bang about and something. this also, yes. We'll share the link to the article as well. So what does लाइक इस्लाम तो ये कहता है ना कि कुन फयकून, अल्लाह ताला ने कैसे क्रिएट किया. अल्लाह ताला ने बोला कुन फयक और वो बन गया. उसके बाद ये कि कुरान की एक आयत है कि वो कहते हैं कि आसमान जो है ना वो इकट्ठे थे और हमने उसको खोल दिया, फाड़ दिया. मतलब दिस इज समथिंग दैट गोज क्लोज टू द बिग बैंग, यू नो, कि वो एक थे और देन भी मतलब उनको रप्चर कर दिया एंड देन दे स्टार्टेड ग्रोइंग. ठीक है ना.
तो बिग बैंग की तरफ ये जाता है, लेकिन अल्लाह ताला ये नहीं कहता कि मतलब वो नथिंग से बना, वो नथिंग से भी शायद बना हो, बट वो नथिंग से इसलिए बना कि अल्लाह ताला ने एक नथिंग को समथिंग बनाया, तो फिर आज ये मेरे एक दोस्त होता था एथियस्ट, तो माइक के बड़ा करीब, अच्छा माइक के डिबेटर होता था, तो उससे एक दफ़ा मेरी ऐसी डिबेट हो रही थी, तो मैंने उसको ये कहा कि अच्छा यार साइंस हैज़ नो एक्सप्लेनेशन, ठीक है, कि कहते हो कि देयर वाज नथिंग और एकदम सारा कुछ हो गया एंड देन इट फेल इनटू दिस ऑर्डर, ठीक है, और इट डजंट मेक सेंस। तो कहते हैं अच्छा टेल मी द इस्लाम, यहाँ पे मैं फंस गया था, मैं पूछूं कि आई डिडंट हैव एन आंसर, मे बी यू डू। तो उसने कहा कि भाई अच्छा एक्सप्लेन इट टू मी द इस्लामिक वे। मैंने कहा कौन, अल्लाह मियाँ ने कहा और हो गया। तो उसने कहा अच्छा तो उससे पहले क्या हुआ। मैंने कहा उससे पहले मतलब अल्लाह मियाँ होते थे। तो मैंने कहता अच्छा उससे पहले बिफोर द क्रिएशन ऑफ अल्लाह। मैंने कहा अल्लाह से पहले कुछ था ही नहीं, ही वाज ऑलवेज देयर, सो देयर इज नो लाइक। तो इज लाइक कोई तो एक पॉइंट होगा ना, अगर आप साइंस को कह रहे हो कि आप ये नहीं एक्सप्लेन कर सकते, टेल अस हाउ द बिगिनिंग हैपेंड, ये आप देखो ना, एक्सप्लेन नहीं कर इसकी सकते। एक्सप्लेनेशन ये ये कहता है ना कि एज मुस्लिम्स आप भी नहीं कर सकते। देखो नहीं, इसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि अल्लाह ताला ने हम्म? हाँ, हाँ मैंने इसलिए किया वली इज सवाल आल्सो के गोइंग टू टेल एन आंसर। एक्सप्लेनेशन, लेकिन जो अल्लाह ताला ने क्रिएट किया ना, वो एक सिस्टम क्रिएट किया है जिसमें कुछ लॉज के तहत सारे काम होते हैं, ठीक है, फिजिकल लॉज के तहत। तो लेकिन जो क्रिएटर है ना, ही डजंट हैव टू बी पार्ट ऑफ दैट लॉ, ठीक है ना, ही इज अ क्रिएटर। जैसे मैं अगर एक टोस्टर बना रही हूँ, वॉशिंग मशीन बना रही हूँ, तो आई डोंट हैव टू बी अ पार्ट ऑफ दैट वॉशिंग मशीन। आई एम टोटली अ डिफरेंट थिंग, washing machine is totally a different thing. Now the washing machine cannot say कि यार मैं खुद से बन गई, मैं बिकॉज जस्ट बिकॉज वो मुझे रिकॉग्नाइज नहीं कर सकती तो वो कह दे। अब ये बात है कि अल्लाह ताला वाज हैज ऑल दैट नॉलेज which is required to put this whole system in place, and he has made it, and he doesn't have to be, he is not a part of, वो उस cause effect link का हिस्सा नहीं है, वो क्रिएटर है। तो उसको फिर उसके पीछे कॉज होने की जरूरत नहीं है, वी डोंट बिलीव दैट ही इज द फर्स्ट कॉज। साइंटिफिकली भी थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन तुझे कर दूं कि space and time are the same thing. If you want to understand universe, if you want to understand the reality, the fundamental reality, and if you have studied Einstein, तो आपको ये समझ आएगा कि space and time are one thing. If there is another time, तो वही space जो है that's another place. और जो कि जब आप travel कर रहे हो तो time का भी travel है और एक space का भी travel है. You gotta transcend both dimensions to travel to a place. So, what do we understand? That this space and time are only a construct of our human thoughts. It's not a real thing. Causation जो है वो हमारे दिमाग में है. God is something above causation. God change नहीं होता. God remains the same. That's what Muslims believe. And when the universe started, universe के अंदर पहले सबसे पहला बिग बैंग हुआ, फिर वहां से एक और प्रोसेस हुआ, वहां से एक और प्रोसेस हुआ, और फिर हम लोग ह्यूमंस अब यहाँ तक पहुंचे. तो a very interesting topic and a very amazing thing. The next thing I want to talk about is the ancient humans. Akshay and Jalal must be knowing a lot about एंशिएंट ह्यूमंस। आज मैंने एक और मूवी देखी थी, लेकिन ये इंडियन नहीं थी। It talked about the first time we learned how to kill. I'm trying to remember the name of the movie. A Space Odyssey, 1950. हाँ, it's a very big movie. Yeah. तो उसमें ये होता है कि वो दिखाते हैं कि इंसान तो थे ही नहीं, they show monkeys because they believe in evolution, everything, and these monkeys are living together and सारे आपस में बात करते हैं, they have a system of communicating and मतलब एक दूसरे से राय लेते हैं। तो one monkey finds bones and then he finds a big stick and he realizes that if he
hit somebody with a stick, they will listen to him now. So, And what did he do with the stone? and then yeah, with the stick, he ends up doing the first murder of like मतलब एक बंदे को मार देता है जो कि opposing leader होता है. तो wait, what was the question? हम शुरू क्या करते बाद मैं क्या बता हाँ तो like वैसे बड़ा like it's interesting how like people would have lived at that time क्योंकि सारी जो चीजें जिस तरह हम जिंदगी गुजारते हैं that would be completely different for a person that was living in ancient times. Like we have like so much information even on this web that they had in their entire lifetime उतनी भी नहीं होगी उनके पास, you know. So yeah, it's a very interesting thing to think about. But they did have this like language. They Yeah. they did have this understanding, ethics, morals, culture, civilization. वो बढ़ता गया ना evolution of it, I think. Like बिल्कुल शुरू में तो बल्कि ये तो so this Islam deals with as well, like the first murder and everything. But like हाँ वो मतलब evolution of them their ethics and morals पहले कम होती होगी as they learned and grew, I guess, तो ज़्यादा होती गई होगी. Like मैं यही I wanted to talk about all these things. Let me just give like a 1 minute speech. What I want to say is कि what Jalal said कि ancient जो हमारे ancestors थे वो मंकी था और उसके हाथ में स्टिक थी और उसने मारा पहला मर्डर कमिट किया और जो है वहां से कुछ शुरू हुआ and something happened. तो what I was trying to debate about is okay, what if all the history that we know from all the textbooks that we have read is wrong? What if there were other civilizations before us? अगर अर्थ जो है वो 24 घंटे उसके पूरा टाइम है बने हुए अभी तक तो humans came on the last of the last quarter of the quarter second. मतलब कि we are at the end. Why do we assume that there was no intelligent species or ancestors before us? Recently, when there was big fires in the Amazon forest, maybe because they wanted more farmland, or maybe because of the world global warming and everything. So, what we saw was the remains of huge civilizations that in the Amazon forest. All of that infrastructure and all of that things were covered and we couldn't see because there was such a big forest over there. And they were colonies of millions of people. Not like Lahore thing, the big colonies. And then when the Spanish people, the Dutch people were the first who came to America. So before the big voyages, there was this famous archaeologist that went over there, and when he was traveling through a river through the United States of America, he saw colonies of millions of people, and they were all along the river. And when after 100 years or 200 years, when the real big ships came, so there was nothing over there. And some people said that maybe he made all that thing up. But the point was that when things like chicken pox, things like पता नहीं कौन कौन से viruses थे on the Europeans when Spanish flu, when they came to America, the Spanish flu just decimated, the chickenpox, smallpox, whatever, that decimated all of their population. A huge number of those people died, and the civilizations that we think were small, were not that progressive. There were huge infrastructures over there. Then we hear about Egyptians. Egyptian जो कि Sphinx है, Sphinx from the carbon dating and from the weather erosion, it seems like it's a Hazrat Nuh ka salab aaya tha, which was like 7,000-8,000 years ago. The Sphinx was created even before that. When we see the stones in the pyramid has 70-ton stones. That equals to like 60 or 70 cars. They lifted those stones
at an angle of more than 10 degrees, which is not possible. And then when you go in the king's chamber in the Pyramid of Giza, there are 70 ton blocks of rock, granite, stacked up on each other. Wow. And we, till this day, we don't have any technology, any crane or anything that can lift such a big weight. And what we know that the pharaohs were not buried in those pyramids. The pyramids were some sort of an energy generating infrastructure that Tesla used to say. Tesla, who invented our electricity, used to say he was impressed and he was all this thing came from the design of the pyramid, and he said there's like a free, unlimited energy which anyone can tap anywhere. You don't need a wire, you don't need a generator. I can show you a way in which you can get free electricity, but sadly, his funding was taken over, and the other guy's partner who gave him $150,000, he had to sell silver, he had to sell wires, he had to sell other things that came with electricity. So we never got to that point. But coming to the But point, that doesn't. Are you saying that these civilizations were before human civilization? I'm just saying that all the history of humans that we know is mostly from 4,000 years. Egyptians के बाद Greeks, Greeks के बाद Romans के बाद फिर हमें बाकी सारा जो भी Prophet Muhammad, the Christianity era. Indus civilization हाँ. थी हमारी वाली. Indus civilization is 2000 like years old. they say कि Indus civilization was very primitive, but we Göbekli Tepe is a place in Turkey. They just found out. Göbekli Tepe is like 10,000 years old, and they see huge infrastructures for water canals, for sewerage, technologies that they don't even find now that is at Göbekli Tepe. So we see the first signs of vegetation. We see the first signs of animal herding. So what I'm trying to say is that why do we think that we are the most technologically advanced civilization that has ever walked Earth? From what we have heard, that there have been multiple disasters on Earth, and even the human population has decreased to zero का size काफी दफा हुआ है 100-200 रह गए थे फिर वापस आए फिर 100-200 हो गए फिर वापस आए. So there's this huge disasters, there's this huge calamities that happen every once a few thousand years, and the whole population gets decimated, and then we build up our civilization from the ground up. So what I'm trying to say is, what do you think about all this ancient ancestors that you had? Were they more technologically advanced yes, than they us? might have been. They might have been more technologically advanced, and because but they. Do you want me to just say that they were not monkeys? Monkeys. Because evolution doesn't work that way, na? The monkeys are still here. I mean, it's not like that the monkeys evolved into humans and they are not anymore. ठीक है. तो और भी बहुत सारे इश्यूज हैं एवोल्यूशन के अंदर जो कि क्वेश्चनेबल हैं. लाइक डार्विन ने जो खुद कहा था व्हेन ही वाज राइटिंग हिज बुक हिज थीसिस, तो ही सेड कि ये जो दो स्पीशीज हैं जो मुझे करीब तरीन लग रही हैं, जैसे फॉर एग्जांपल दिस बर्ड एंड दैट बर्ड, या दिस मैमल एंड दैट मैमल, और दिस मंकी एंड दिस ह्यूमन, तो इनके बीच में देयर आर लाइक मिलियंस ऑफ लाइक सब स्पीशीज जो कि एक स्पीशीज से दूसरे स्पीशीज पे आने में मतलब ऐसे मैजिक से नहीं आ जाती कि आपको जैसे अक्षय कुमार कहेगा कि स्टिक मिल गई और आपने पत्थर मारा और बन गए. दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन लाइक दैट. तो जो एक स्पीशीज से दूसरी के बीच में एवोल्यूशनरी स्टेप्स हैं वो कोई मिलियंस हैं. और जो अर्थ का टाइम है वो अलाउ ही नहीं करता इतने सारे, क्योंकि एक म्यूटेशन, अगर आप म्यूटेशन के उस पर कर रहे हो कि आपकी जीन्स में कोई म्यूटेशन होती है तो फिर आपके अंदर एक चीज चेंज हो जाती है, तो वो म्यूटेशन इतनी रेयर है हिस्ट्री ऑफ टाइम के अंदर कि वो शायद 50-100 साल में एक म्यूटेशन होती होगी.
किसी भी स्पीशीज के अंदर, वो कंपैटिबल ही नहीं है। फिर डार्विन सेड के जो हम एक्सक्यूवेशन का बहुत वो था ना कि ये एक्सक्यूवेशन करेंगे, तो फिर जब हम करेंगे तो नीचे जितना डीप जाएंगे तो हमें सारे लेयर्स में एक छोटी फिश से बड़ी फिश के बीच के और बहुत सारे लाइक लेवल्स मिलेंगे। तो वो कुछ भी नहीं मिला ना। एक स्पीशीज मिली, फिर दूसरी स्पीशीज मिली, फिर तीसरी मिली, फिर चौथी मिली। कभी भी उसकी इंटरमीडियरी जो वो एक्सपेरिमेंटेशन वाले लाइक वो कुछ भी नहीं मिला। तो इसकी वजह से मतलब हम लोग जो मुस्लिम्स हैं, हम इस बात पे बिलीव करते हैं कि एक जो भी स्पीशीज आई वो उसकी एवोल्यूशन इस तरह जरूर हुई कि जब अर्थ जब बना, सूरज से निकल के टूट कर बाहर निकला, तो वो एक मोल्टन लावा की शक्ल में था। फिर वो कूल डाउन हुआ, फिर उसमें ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की वो बनी, फिर वो ऑक्सीजन उसमें आया, फिर वाटर जैसे कि वो मीटियोर से यहाँ पर पहुंचा है। तो इसी तरह से हम कहते हैं कि जैसे जैसे उसकी कूल डाउन और जैसे उसकी शक्ल बनती गई, तो पहले इंसेक्ट्स अलाउ कर रहा था उसके, फिर उसके बाद वो फोटोसिंथेसिस अलाउ हुई, फिर मतलब कि एवोल्यूशन हुई है। यानी वो स्पीशीज लोअर से हायर पे आया है, मगर वो हर के कौन आया है, क्या वो खुद से ही खुद बनी है, ये हम बिलीव नहीं करते। हर नई स्पीशीज का पहला पेयर अलग नहीं यहाँ पर रखा है, क्योंकि उसके और उसके दूर के बीच में जो इंटरमीडिएट स्टेप्स हैं, मिलियंस ऑफ देम, दे आर नॉट देयर। सो का पहला पेड़ अल्लाह ने वैसे ये कुरान में लिखा हुआ है? Is this in the Quran? like this is this what I'm saying is कि जो म्यूटेशन वाली जो चीज है वो मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं हुई ना इस यूनिवर्स में। मगर we can see mutation on earth in living creatures, जैसे कि एक बर्ड की कॉलोनी है जिसको आप सेपरेट कर दो एक आइलैंड के ऊपर, तो आपको 30-40 साल में म्यूटेशंस नजर आने लग जाएंगी। इंसान जो हैं, जो कि हिमालय के ऊपर, जो कि मंगोलियंस रहते हैं, इंसान का एग्जाम्पल डिफरेंट है, बिकॉज इंसान के अंदर जितनी अडेप्टेबिलिटी है वो किसी और स्पीशीज में नहीं है। हर स्पीशीज अपनी एनवायरनमेंट के साथ लिंक्ड है। मगर आई एम ट्राइंग टू से दिस थिंग दैट मंगोलिया के अंदर जो इंसान रहते हैं उनके लंग्स जो हैं वो बड़े हैं, उनकी जो ऑक्सीजन की इनटेक की कैपेसिटी है वो ज्यादा है। अगर उनको पहाड़ों के ऊपर आप भगाओगे तो वो पूरे पहाड़ के ऊपर भागता जाएगा ऊपर तक, टॉप तक। मगर वहाँ अगर हमारे जैसा जो कि सी लाइन क्रीचर है, बीच वाला, वो अगर वहाँ ऊपर चला जाएगा तो वी कैन नॉट इवन ब्रीथ ओवर देयर। सो वी कैन सी म्यूटेशंस इन द ह्यूमन जीन्स। And for your question about why, how could humans progress? The human brain, the monkey brain, went from a very small size to a very large size in a very little time. That's where No. evolution. There are small brain monkeys still here, and there are big brain monkeys still here. I mean, that is. The thing is that the monkey brain, it has maybe the same amount of cells, the same structure, physical structure. लेकिन what's the reason कि हम लोगों ने तो 1,00,000 साइंसेस बना लिए, 1,00,000 इन्वेंशंस कर लिए, लेकिन उन्होंने वो स्टिक पकड़ने के बाद जो है ना दोबारा कुछ कर नहीं सके। तो वो इतना बड़ा क्या डिफरेंस है जो कि ह्यूमन में और अमित, ये छोटा सा डिफरेंस देखी थी Planet of the Apes. मैंने उसकी 4-5 किस्में देख चुकी हूँ। It's very interesting, लेकिन that's not happening in the real life में, ऐसे नहीं। लेकिन what do you think about this story? I just googled it. It says human DNA is on average 96% identical DNA of our most distant primate relatives, and nearly 99% identical to our closest relatives, chimpanzees and bonobos.
मतलब यही तो मैं तुम्हें बोल रही हूँ ना कि 99% Actually, अगर the हमारा human कंस्ट्रक्ट सेम है तो फिर भी हम इतने डिफरेंट क्यों हैं? actually the human DNA is 96 or 90% similar to the trees as well. अच्छा अच्छा. Everything that lives on Earth has practically the same DNA. Why do you see the same two eyes? Why do you see the same nose? And the point that I was trying to say is that problem जो है evolution के अंदर काफी ज्यादा हैं. Like I heard this very ridiculous theory recently that how could the monkey's brain size go from like a very small size to a human brain size in such a small time. So what the best possible theory they had is that there is this mushrooms that grow that are a psychedelic drug that the monkeys took. And when the monkeys took that drug, they hallucinated and they suddenly So had many people are feelings taking about those love drugs. and They, they why had they? emotions, and because of those psychedelic drugs, suddenly the brain size started increasing and they started caring. Monkey can care about another monkey if he's on drugs. He can develop communication skills. He can talk to another No, we monkey. can do all that without drugs also. So that's really ridiculous type of theory. That's one of the theories. That is. So yeah, and another thing that what about the start of life on Earth? Yeah, Uh, yeah, that's interesting. basically, ये एक fact है कि how there's something missing in our science. Missing my what? There is no better way to say this. There's something missing in our science, which is uh, we say कि हर चीज causation से होती है. पहले मछली आई, मछली से जो है कोई छिपकली बनी, छिपकली निकल के पानी में आई, छिपकली से टर्टल बना, फिर जो है ना goes on and on. But they for evolution to happen, there should be something more than causation. Why? Because the DNA that the humans have has three simple things: amino acids, proteins, and some other one more thing. But the structure is so complicated. कि if you take a scrapyard of airplanes, सही है, और आप उससे कहो कि मैंने एक Boeing 747 इकट्ठा करना है. And if in a million and one chance कि वो एक DNA का molecule बन भी जाता है, तो what is the chance कि पूरी दुनिया में जहां भी आप उठाओ तो आपको कहीं ना कहीं से DNA निकल आता है? Why is DNA so prevalent? How the evolution can say कि bonobo से chimpanzee बन जाए, मगर the evolution cannot say कि यूनिवर्स स्टार्ट होगी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से और वो एंड होगी जो आज ह्यूमंस की इंटेलेक्चुअल थॉट है और हमारे जितने ब्रेन सेल्स हैं एंड the way we can think about the universe, about God, and all these abstract things that we can create. So the point is that there should be some underlying structure in science that is not just causation. So one thing after happening enough, there's something guiding the causation, which takes it to a way जहाँ कुछ चीजें बहुत ज्यादा हो रही हैं और कुछ चीजें बहुत कम हो रही हैं. तो सेलेक्टिव चीजें, हाँ, सिलेक्टिव चीजें. एवोल्यूशन जैसे हो रही है वो बहुत सेलेक्टिव लग रही है. हाँ. Like it knows what to do, what it's going to do, because there's this very small amount of time in which there's so much variety. जितनी लाइफ की वैरायटी अर्थ के ऊपर, छोटा सा अर्थ है जो कि पूरे यूनिवर्स में एक ही बॉल है छोटा सा, जिसके अंदर इतनी वैरायटी, मिलियंस ऑफ स्पीशीज. तो और इतने थोड़े से टाइम विच वी वाज जस्ट सेइंग कि व्हेन द ह्यूमन सिविलाइजेशन हैज अराइजन, और उससे थोड़ा ही टाइम पहले है जब लाइफ अरोज. और लाइफ कहाँ से आई और लाइफ को कैसे आप डिफाइन करते हो? और अगर डीएनए है भी, जिसको वो कहते हैं ना प्रीमोडियल सूप था और उसमें वो केमिकल रिएक्शंस हुए और वो मिलकर वो अमीनो एसिड बन गया. अमीनो एसिड की चेन तो बन गई, मगर वो उसमें जिंदगी कैसे आई? The DNA is very complicated. It's like it got so much information about you, the height, the age, the size, everything about you. But the point is that DNA can only copy a human being. It does not copy
the knowledge that you gain. अब हम लोगों ने जितनी नॉलेज गेन की है, अगर हमें नॉलेज ट्रांसफर किए बगैर हमारे जगह हमारे बच्चों को जीरो से स्टार्ट करना पड़े तो हमारे बच्चे बंदरों जैसे हो. नहीं, One of the बंदरों जैसे फिर special again you are saying the wrong thing. वो special सिर्फ एक things आम that इंसान. humans have is that we can transfer our knowledge without the thing of DNA. नहीं आंटी There are वैसे so many वैसे amazing things that humans do which no chimpanzee can do, no other life or आंटी लेकिन वो लाइक बहुत पहले मतलब ये कह रहे हैं कि फर्स्ट करें सारे ह्यूमंस आर नाउ ऑफ द फेस ऑफ द प्लैनेट और अब नई एक हमारी जनरेशन हमारे बच्चे सच्चे हैं तो वुड दे नो हाउ टू कम्युनिकेट लाइक अस और वुड दे यू नो जैसे शुरू में Because- केवमैन होते थे they were practically like monkeys आंटी no. Wandering monkey, hit him with a ये मैं आपको stick, दिखाता हूँ। sticky monkey. ये होते थे केवमैन पहले नहीं, मतलब ये केवमैन की जो पिक्चर है ये किसने बनाई है? आंटी ये वो Who made this रिसर्च picture? करते हैं वो सारे अब ये रिसर्च नहीं है, ये आर्ट है. ये This is how, you know, this is actually art. This is how we There think is no, they haven't found anything like that. For the Made this caveman picture. stream, there is actually a guy who looks like the caveman living right now. The thing is कि ये जो डार्विन ने एवोल्यूशन की थ्योरी बनाई थी ना, वो इतनी इनको पसंद आई कि उस थ्योरी को डेकोरेट करते हुए they started finding these ape mans. इन्होंने ऐसे ऐसे और इसको होमो एलिप्टिकीज होमो फ्लाना कीज मतलब वो बना एंड यू नो उसी साइंटिफिक कम्युनिटी में बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने उस वक्त उनको नेगेट किया कि ये एक मॉन्की की स्कल को लाकर तुम उसको ये पिक्चर कैसे ड्रॉ कर रहे हो. फिर उन्होंने म्यूजियम्स में वो पूरी बना के ना उनकी शक्लें और वो सारा कुछ और उनको ऐसे प्रेजेंट किया कि जैसे इस तरह से ना 10-15 स्टेप्स में मॉन्की से ह्यूमन बना है लेकिन रियलिटी में वो मॉन्की के स्कल्स थे. मतलब ऐसे नहीं था आंटी ऐसे नहीं था, ऐसे नहीं हुआ था. अच्छा लेकिन आंटी I की just, picture just देखिए। want to cut it real quick. I think we've got like 10 or 15 seconds to end the podcast because our hardest is ending. So, any final thoughts, Jalal, and any final thoughts, Aneela? थोड़ा सा लंबा कर सकते हो. मतलब कि My 5 final seconds. thoughts is that this was very interesting, all the topics, and we should, matlab, we've been a little raw in all these this conversation. We're going to do this again. Yeah. Again. मैं यही सोच रहा आंटी we should actually have a segment where you know we could have like some debates about stuff so like you know we can all bring evidence and talk about वो बड़ा एक interesting सा हो जाएगा You know, like, I think we should call Akshay here, Akshay- and then Auntie, Akshay we हमारे should साथ है। call one monkey here also. but like I think this could be really fun like this the idea of like you know us three talking about different things because a lot of different views on the table you know Yeah, it's just like opening the mind and opening the conversation, and I mean, we need to do. अभी बल्कि more. अगले वाले में वो टॉक टू अबाउट रिलेशनशिप्स आंटी एंड लाइक आजकल के बच्चे क्या कर रहे हैं और आपको मतलब व्हाट डू दे नीड टू डू Prank होना चाहिए बच्चों को. So I think the recording is still going. So I should say something at the end as well. It was such a nice podcast. I had such a wonderful discussion with Jalal and with Miss Aneela Shahzad, and we learned a lot of good things today. About soul, about philosophy, about how the universe Akshay. began. Akshay Kumar. and the new movie don't watch it So I am hoping that we have conversations like these every now and then, and all the people who are watching should comment below. आपको क्या अच्छा लगा, आपको कुछ क्या बुरा लगा है? Do you want us to talk about something? Do you have We can- questions? We have questions. And since the recording is still going, Jalal, you can do like a 10-15 seconds ending. I'm just thinking about future podcasts. So join us next time where we discuss a lot of different things. But if you ever have any questions you want to ask us, and because like we have so many like diversified views, so like let us know, and then we'll each answer what we think it is. You know, Something like a reaction video. Yeah. Or whatever you guys want to ask.
we can Yeah. answer whatever. If you want to listen to our opinion, we're here to give our opinion for free on this podcast, Wali Wonders. Thank you guys. Do you want to sign out? Do you want to say something I else? just want to say, get it while it's free, because बहुत आगे जाके it's gonna be paid. Once Netflix buys our podcast, It's gonna be paid. So thank you guys. Allah Hafiz kar le, and then we'll sign out. Thanks. thank you for